पूछना था कुछ? Ma'am, he is only answering you. Yes, ma'am, I am present. Okay. Got it. So अभी हम लोगों का सिलेबस जो है वो इट इज एट अ गुड पेस. सो ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स हम लोगों ने कर लिए, राइट? एंड आई थिंक कि उसमें कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन या क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं है. दैट इज व्हाई यू आर नॉट आस्किंग. ठीक है. So from today onwards we'll be starting with the generic studies, right? So you have to study 3 genera in this particular bryophyte topic. One is Markantia, then you have Anthoceros, and then you have Funaria. ठीक है. So Markantia, Anthoceros और Funaria हम लोग करेंगे. और इसमें जो जनरल टर्म्स हैं, say for example if I'm saying that there is homomorphic alternation of generation, say suppose I'm saying कि there are the rhizoids, they are simple and tuberculate. So I don't think there is a need to explain it. पर अगर फिर भी उसमें आपको किसी तरह का क्वेश्चन होता है या कुछ होता है तो यू कैन आस्क मी देन एंड देयर. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी बेटा, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो जस्ट पर्टिकुलर टॉपिक में the thing which I am saying that it is important from examination point of view, so you are going to take a note of it. And in case of मतलब these generic study, the best way is, मैंने आपको I hope कि I have told you the 5 or 7 heads under which you need to study anything in bryophyte. Did I have earlier mentioned that? Yes, ma'am. है ना? सो आप कभी भी कोई भी जेनेरा शुरू करोगे तो उन 5-7 हेड्स के अंदर जब आप करते हो, so that genera is already prepared for you, right? So rather than opening up your books and digging deep inside, so there is a smart way to do the studies, and that smart way is कि आप अपनी क्लास, थ्योरी क्लास जो है उसको अटेंड करिए और उसमें आपको जो टॉपिक्स या जो चीजें बताई, कंसेप्ट बताए जाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. And when you get back to your book and start preparing notes, so you can make the notes under those 7 headings, right? और एक बार, this is a one time work. जब आप एक बार बैठ के उसे कर लेते हो, तो आपके पूरे सेमेस्टर के लिए your notes are there. It is already prepared. ठीक है. Be it from practical point of view or be it from theory point of view, क्योंकि practical में भी अब जैसे जो मैं आपको आज मार्केंशिया करवाने जा रही हूँ तो उसका मैं आपको थ्योरी बताऊंगी और थ्योरी के साथ साथ ही पूरा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा आपको. एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप उसको प्रैक्टिकल वर्क में कैसे लिखोगे. ठीक है. सो यू आर डूइंग द सेम थिंग. So it is better that to sit one day, take one genera and complete the notes. It's hardly going to take 2 to 2.5 hours of your whole day. ठीक है बेटा. बट जब आप वो नोट्स बना लेते हो so then they are there with you forever. चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट का क्वेश्चन हो, असाइनमेंट का क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल वर्क हो, आप उसमें से इंफॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग अपने यूज के लिए ले सकते हो. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. हाँ, तो आप इसे से आप कर लीजिए तो it will be for your own good. Okay, so let's start with the class and let me present my screen. Is it visible to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So
today we are going to do Markantia, right? So Mar. अच्छा, एक चीज और जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये है कि अभी आई वाज चेकिंग द क्वेश्चन आंसर शीट्स फॉर अभी जो आपके एग्जाम्स हुए थे दिसंबर में, तो उसमें क्या है, मोस्टली बच्चों ने जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं सो दे डोंट अंडरलाइन इट. डू यू नो देयर इज अ पर्टिकुलर वे टू राइट अ साइंटिफिक नेम? Yes, ma'am. कैसे लिखते हैं साइंटिफिक नेम? So suppose you have Markantia species. So how you are going to write a scientific name? What is there written in nomenclature? Nomenclature क्या बोलता है, उसको कैसे लिखते हैं? मैम जीना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. Binomial nomenclature लिखते हैं और italics में लिखते हैं. But now we are not trained in italics. So how we are supposed to write? Underline कर देता नाम पूरे name के नीचे. Define them separately, and generic name should begin with a capital letter and specific epithet to be written in cursive, like small letters. Okay, so इन दोनों में से which one is the correct? First one. First one, ठीक है. और अगर उसके साथ species भी है, say suppose there is a species viridis, right? So how this viridis will be written? Small letters. Means small letters. और underline. Underline. इन दोनों में से कौन करेक्ट है, ए बी में से? Second one. B. राइट, ठीक है. सो either you write Markantia viridis dot, ठीक है, या फिर you underline it, या फिर you can write, अगर Markantia कोई species नहीं है so you can also write species, ठीक है. But scientific names are always supposed to be underlined and the first letter should be capital. और जो बच्चे ये फॉलो नहीं करते हैं, मार्क करते हैं. So whenever we are going to check the copies, we are very, especially I am very particular about how the children has written the scientific name. आप साइंस में लैंग्वेज कैसे लिख रहे हो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड एंड लीस्ट कंसर्न्ड. आपने ग्रामेटिकल एरर्स किए, इट डजंट काउंट फॉर मी, बट यू हैव रिटन द साइंटिफिक फैक्ट एंड प्रूफ एंड things in a scientific manner. This is what matters to me. So please be careful of this and be watchful of these mistakes. So today we are going to study Markantia. Now Markantia आप लोगों को पता है, that's a bryophyte, and bryophytes, they were the early developed plants. They were also known as the amphibians of plant kingdom. So Markantia दिखता कैसे है? So आप जो ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इस तरीके से जो फ्रैगमेंट्स आप देख पा रहे हो, so these are actually Markantia thalli, right? देख रहे हो? Yes, ma'am. So what are the common observations which you can see, which you can make by looking at the picture here? Thallus-like body and absence of roots, leaves and stems. Right, thalloid body देख पा रहे हो. इस पिक्चर को देख के और क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? अभी बोला thalloid body है, राइट? और किसी को कुछ नहीं नजर आ रहा पिक्चर में? ब्रांच थैलस है, ओके, गुड. हम डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, फ्लैट थैलस है, गुड. Found in moist and damp areas near like aqueducts. मैंने बेटा पिक्चर को देख के बोला है, ये तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट बोल रहे हो आप. पिक्चर को देख के और क्या लग रहा है? Consists chlorophyll. ग्रीन थैलस है, ओके, क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट, गुड. Ma'am, their sex organs are visible with circles.
certain areas. Ma'am, colonemia. Okay, so they are, in bunch in great number. किसी को डाइकोटमस ब्रांचिंग नहीं नजर आ रही? हाँ, थैलस जो है वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड है, ये नजर नहीं आ रहा है क्या? Other than that, are you guys able to see this dark line? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? So there is a thick darkened line which is present in the middle of the thallus. ये देखो, just like a vein. ये देखो, ठीक है? So ये चीजें आप इसमें observe कर पा रहे हो. Now we are going to see one by one कि how what are these lines and how the thallus they actually look like. So Markantia plant in nature it looks like this. ठीक है? आपको sorry, आपको commonly ये वैसे visible नहीं होता जैसे बाकी plants होते हैं. So you have to जब नीचे ground पे जो plants होते हैं उनको हटा के when you are visiting a hillside or यहाँ पे continuously dripping of water होती है. तो जब आप hill station में जाते हो तो आप देखते हो कहीं पे waterfalls हैं. तो आप अगर वहां जाओगे और वहां plants को जो ऊपर के plants हैं उनको cover हटा के देखोगे तो नीचे जमीन पे ये इस तरीके की कॉलोनी बनी होती है. ठीक है? They are matted. तो एक मैट लाइक अपीयरेंस होती है. सो इस तरीके से दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, दे आर नॉट अबव द सबस्ट्रेटम. ठीक है? So we are going to see how they actually look like. So you can see the substratum over there, and this is a typical Markantia thalli जहाँ पे आप dichotomy बहुत clearly देख पा रहे हो. Are you guys able to see this? ये देखो, यहाँ से ये it branched into two, and then it branched into two. Then it has started branching into two. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Markantia thallus का सबसे पहला feature ये है that it always branch. It is having a dichotomous branching like any other bryophyte, right? And then you have the dorsal and ventral surface. This is a dorsal view or a ventral view in this picture? Ventral. हाँ. ये किसने बोला भाई? डॉर्सल है कि वेंट्रल है? Dorsal. डॉर्सल है या वेंट्रल है? एक बच्चा बोल रहा है डॉर्सल है, एक बच्चा बोल रहा है वेंट्रल है. डॉर्सल है मैम. डॉर्सल है? सारे लोग एग्री कर रहे हो डॉर्सल है? So this is a dorsal surface because ventral surface is always facing the substratum. ठीक है? जो भी सबस्ट्रेटम है, जो जमीन है, उसको जो साइड नेचुरली फेस करता है वो वेंट्रल सरफेस होती है. एंड द सरफेस व्हिच फेस ऑपोजिट टू द या फेस अबव टू द अबव, सो दैट इज द डॉर्सल साइड. सो दिस इज अ डॉर्सल व्यू व्हिच यू आर सीइंग हियर, राइट? और वेंट्रल व्यू जो होता है वो उसमें आपके राइजोइड्स विजिबल होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे राइजोइड्स नहीं. सो लेट्स टेक वन बाय वन. व्हेन यू आर सीइंग दिस डॉर्सल सरफेस, ओके, सो व्हेन यू आर सीइंग दिस डॉर्सल सरफेस, राइट? सो एक जो चीज थी वो ये है कि आर यू गाइस एबल टू सी दीस डॉट्स? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So they are known as the pores, right? They are meant for, so there are hexagonal polygonal cells over there in the entire dorsal surface. और उन cells के बीच में there is a this pore, small pores, and these pores they are spread on the entire surface. So ये जो pores होते हैं they are
actually meant for gaseous exchange. ठीक है, gases के exchange के लिए these pores are there. जैसे higher plants में आप stomata होते हैं, वैसे lower plants में you don't have that stomata like complex organization, but still you have the pores, right? Then you have, apart from those pores, you have these median. Just a moment. Okay. So इन pores के अलावा ये जो आप लाइन देख पा रहे हो इसको बोलते हैं median groove, right? So this is median groove. So जब आप सामने से thallus को देखते हो, so it appears like this, and the median groove, it appears to be a darkened area, a nerve-like area. पर जब आप उसको अपने हाथ पे रखोगे thallus को, so when you are actually seeing, so what you see, आप लोगों को TS, LS ये concept पता है आपको? What is a TS? Yes, ma'am. Transverse section and longitudinal. Transverse section. LS? Longitudinal. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ, right? Say suppose I cut like this. So whatever section I am going to get, it will be a VS, ES, LS. What it will be? Transverse section. TS. Transverse. Okay. So आप जिन बच्चों को, काफी बच्चों को ये कंसेप्ट पता है, जिन बच्चों को ये ट्रांसवर्स सेक्शन, अच्छा चलो ये कंसेप्ट मैं अभी लेती हूँ, देन आई टॉक टू, बट पहले मैं आप लोगों को ये डोर्सल व्यू का और बता देती हूँ. So this is the median groove, and जब आप ventral surface पे देखोगे, so we know कि rhizoids are there, you have, tuberculate and you have simple rhizoid, right? And then when we talk about the scales, so you have two kinds of scales which are present in the marcantia. मैंने आपको बताया भी था कि appendicular scales जो हैं, they are closer to the median groove या middle line, and then you have ligulate. So ligulate scales जो होते हैं वो common scales हैं. Appendiculate scales, ligulate scales हैं, but they have an extra appendage present on the top portion, right? So you have irregular shaped long cells in the scales, be it ligulate or appendiculate, and both the scales, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो that they are, pinkish, violet or purplish colored because of the presence of a pigment called anthocyanin. So ये anthocyanin में already present होता है, and that is why it imparts a color to the scale. ठीक है? And what are the functions of rhizoids? Rhizoids, they are the organs which are meant for anchorage and absorption. ये substratum के साथ hold भी करते हैं, and then it also sucks all the nutrients and all the water from the substratum. And what are the scales meant for? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ जी. स्केल्स का क्या फंक्शन होता है? Protection. Right, scales are meant for the protection of the growing apices or the median groove, right? So you know this. Okay, let's move further, and then we are going to see the transverse section of thallus. अब आप बताओ कि जब आप ना माइक्रोस्कोप पे काम करते हो, so I don't know, but I might ask कि कभी अगर ऐसा प्लान हो पाए that you guys can come and learn the
how to use the microscope or how to cut a section, so it will be good for you. But जब तक नहीं होता है, so you can imagine by yourself. ठीक है? So अब आप देखो कि the thallus, it is appearing like this. It looks like this. But here, when I have written the thallus, the TS of thallus, it's completely different. ठीक है? और ये जो मार्केंसा का थैलस होता है ना बेटा, बहुत पतला होता है. It's just like a leaf. लीफ देखी है ना आपने, कितनी पतली होती है पत्तियां, है ना, उतना ही पतला ऐसा थैलस होता है. तो सोचो आप उसको जब टीएस करते हो, सो यू नीड टू हैव वेरी प्रिसाइज सेक्शन, बहुत थिन होना चाहिए. तो जब आप ब्लेड से कट करते हो ना, से सपोज दिस इज अ थैलस, तो जब आप ब्लेड से इसको कट कर रहे होते हो, तो बच्चे कई बार बोलते हैं कि मैम इतना पतला काफी है, इतना पतला, मैम ये जो दिख रहा है इतना काफी है. सो सेक्शन आपका इतना फाइन होना चाहिए, तभी वो इस तरीके का अपीयरेंस आपको माइक्रोस्कोप में देगा. ठीक है? अगर आपको ऐसा सेक्शन माइक्रोस्कोप में नहीं जब तक दिखेगा, दैट मीन्स कि आपका तब तक टीएस ट्रांसफर सेक्शन थैलस का नहीं आया है. अब आप एक सिचुएशन सोचो, आपके घरों में ब्रेड आती है, ब्रेड लेके आते हैं आपके पेरेंट्स? यस मैम. Yes, ma'am. आती है ना ब्रेड? है? कौन सी ब्रेड खाते हो? कौन सी ब्रेड खाते हो? Britannia. ब्रिटानिया. और इंग्लिश ओवन. इंग्लिश ओवन. ओके. और नॉर्मल ब्रेड खाते हो. ओके. तो तरह तरह की ब्रेड खाते हो. अब आप मेरे को बताओ, जब ब्रेड आती है, आपका जो पूरा एक लोफ आता है, पूरा ब्रेड स्टैक आता है, तो जब आप उसको बाहर से एक साथ देखते हो, तो वो कैसे कलर का दिखता है आपको? ब्राउन. ब्राउन दिखता है. ठीक है? बट जब आप एक ब्रेड स्लाइस उठाते हो, तो कैसा दिखता है वो? वाइट. वाइट दिखता है ना? सो यू कैन इमेजिन योर सेक्शन लाइक दैट. सो वो जो पूरा ब्रेड का स्टैक है, इमेजिन दैट इट इज अ मार्केंसा थैलस. तो जब आप जब ब्रेड होता है, राइट, सो इमेजिन कि वो जो ब्रेड स्टैक है वो एक थैलस है. तो जब आप उसको कट लगाते हो, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल वो ब्रेड स्टैक आप ऐसे रख दोगे तो वो टेबल पे खड़ा हो जाएगा. पर आप एक ब्रेड को खड़ा करने की कोशिश करोगे, क्या वो खड़ी होगी? वैसे नहीं खड़ी होगी, राइट. सो इट्स गोइंग टू फॉल डाउन एंड टर्न एंड स्टार्ट्स अपीयरिंग वाइट. सो जो चीज आपको ब्राउन दिखाई दे रही थी, वो जैसे एक ब्रेड आप अलग करते हो तो वो वाइट दिखती है, राइट. द सेम केस इज विद दिस सेक्शनिंग ऑल्सो. जब आप उसको कंप्लीटली थैलस होता है इंटैक्ट, तो आपको वो ग्रीन नजर आएगा, जब तक वो इतना पतला सेक्शन नहीं करता है कि इट इज नॉट एबल टू स्टैंड बाय इटसेल्फ. ठीक है? जब बहुत पतला होता है, जब इतना 1 cell थिक होगा, तो वो अपने आप इट इज गोइंग टू फॉल डाउन एंड इट्स गोइंग टू अपीयर लाइक दिस. ठीक है? तो ये मैं आइडिया आपको इस पे दे दी थी दैट आपका सेक्शन कितना पतला होना चाहिए, बिकॉज द स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग कि मैम अब इतना दिख रहा है, इतना चलेगा, इतना पतला काटें. ठीक है? तो वैसा नहीं है. आपका जब खुद ब खुद पतला कटेगा, तो वो खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा. ओके? सो then you have this section. So let's study this section. What are there in this section? So this is a microscopic view. ये जो section आपको दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है. ठीक है? ये डायग्रामेटिक व्यू है. So this is microscopic section, microscopic view. And this is a diagrammatic sketch. Right? So पहले मैं आपको इसे भी समझा देती हूँ. चलो. So this thallus is divided into 2 regions. One, एक
रीजन जो है वो ये है,